पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज हक के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। हेलो एंड वेलकम टू लाफायट, लुइसियाना। मैं इस वक्त अपनी अमरीकी रोड ट्रिप के 7वें दिन पे हूं। एक हफ्ता हो गया मुझे न्यूयॉर्क सिटी छोड़े हुए। मैं इस वक्त अमेरिका के केपी बलूचिस्तान तक पहुंच गया हूं। मैं इस वक्त डीप साउथ के डीप साउथ में हूं, लाफायट लुइसियाना में हूं। लुइसियाना इसलिए इंटरेस्टिंग जगह है क्योंकि इधर दो क्लैश होते हैं अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ इधर के लोगों के। एक तो है वो सकाफती क्लैश है। इधर का जो कल्चर है, जो केजन कल्चर है, वो एक अलग कल्चर है, अलग जुबान। फ्रेंच स्पीकर्स हैं इधर के जो 400 साल पहले कनाडा से आए थे और उनको फिर बहुत टारगेट किया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया, मगर उन्होंने अपनी कुकिंग, अपनी जुबान और इवन जैसे आप देख सकते हैं अपनी पेंटिंग्स जो हैं वो उन्होंने संभाल के रखी, ख्याल से रखी, बड़े प्यार से रखी और उनको प्रिजर्व किया। मगर फिर भी उनका जो कल्चर था, सकाफत जो थी, वो टारगेट की गई, डिस्क्रिमिनेट की गई। मगर वेरी इंपॉर्टेंटली मुईशत भी इधर एक मसला बनी है। ये ऑयल कंट्री है, इधर तेल बहुत है, वसाइल बहुत है, मगर इधर जो कंपनीज आती हैं तेल इधर से निकालती हैं और फिर बाहर जो है बड़े बड़े जो इधर एस्टैब्लिशमेंट के गढ़ हैं, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टेक्सास, उधर भेज देती हैं। तो आप कह सकते हैं कि बनिस्बत जो एस्टैब्लिशमेंट के गढ़ हैं वो ये जो इलाका है वो गरीब है। तो मुझे इसलिए डीप साउथ इसलिए देखना था बिकॉज पाकिस्तान के जो छोटे सूबे हैं केपी बलोचिस्तान, उनका भी यही मसला है हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हमारे तख्त के साथ। इट्स अ इंटरेस्टिंग प्लेस टू ड्रॉ दैट कंपैरिजन। और मुझे उम्मीद है कि जैसे इधर के लोगों ने अपनी सकाफत को प्रोटेक्ट किया, अपनी मुईशत को प्रोटेक्ट किया, और फिर इन अ वे जैसे ट्रंप की जो राइज हुई, ट्रंप 2.0 जो आजकल चल रहा है, ट्रंप की दूसरी हुकूमत चल रही है, मगर मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो मूवमेंट है वो इन दूर दराज के इलाकों से शुरू हुई। जब जो तख्ते वॉशिंगटन था, जो तख्ते न्यूयॉर्क था, जो तख्ते कैलिफोर्निया था, उसको उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने और एक पॉपुलिस्ट रेजिम, एक एक्चुअली ऐसी गवर्नमेंट लाया जिसमें जो इधर के दूर दराज इलाकों के, गरीब इलाकों के जो लोग हैं, उन्होंने फिर अपना राज किया। अब ट्रंप कितना एस्टैब्लिशमेंट या एंटी एस्टैब्लिशमेंट है ये तो खैर आप सबको पता है, वो एक अलग कहानी है। मगर इंटरेस्टिंगली इधर के लोगों ने इधर की गुर्बत को का मुकाबला करने के लिए, इधर की डिस्क्रिमिनेशन का मुकाबला करने के लिए, इधर जो एक आप कह सकते हैं इनको नीच समझा जाता है, इनको कमतर समझा जाता है, जो बाइकोस्टल इलाके हैं उधर, जो एस्टैब्लिशमेंट के इलाके हैं उधर। सो पुश बैक जो आया है वो उसका एक जरिया, एक उसकी शक्ल डोनाल्ड ट्रंप है। एनीवेज, ये तो डीप साउथ की कहानी है। पाकिस्तान में इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग वीक। आज संडे है तो जायजा लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या चक्कर चला है। एक तो ऑब्वियसली जो बड़ा चक्कर चला है वो फैज हमीद का चला है। ये तो तसलसल में चलता रहेगा, ये एक कड़ी है इमरान खान को इवेंचुअली टारगेट करने की। मगर साथ साथ खान अकेला नहीं है। हमने जब पिछले हफ्ते कांग्रेस का लेटर देखा जो बहुत सारे कांग्रेसमैन ने लिखा इमरान के हक में और आसिम मुनीर के खिलाफ, उस पर अमरीकी हुकूमत ने ज्यादा नहीं किया बल्कि पाकिस्तान को F-16 की इमदाद दे दी, जिससे पाकिस्तान के F-16 अब 2040 तक चलेंगे। वो एक डिफेंस बेस्ड एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। मगर ऑन द अदर हैंड अक़वाम मुत्तहिदा ने इंटरेस्टिंग जो है पेशरफ्त की है। जिल एडवर्ड्स जो हैं, जो उनकी टॉर्चर की रेपर्टवार हैं, स्पेशल रेपर्टवार, उन्होंने एक लेटर लिखा। पिछले हफ्ते वोल्टर टर्क ने एक लेटर लिखा। पिछली गर्मियों में जो इनकी एक कमेटी है, एक पूरी कमीशन है जो गलत अरेस्ट पे, गलत डिटेंशन पे, आर्बिट्ररी डिटेंशन पे जो वे इन करती है, उसने लिखा। तो कम से कम एक आप कह सकते हैं आपका एक बैनुल अक़वामी पार्टनर रह गया है अक़वाम मुत्तहिदा, जो अभी तक ये काम कर रहा है, मगर उसके दांत नहीं है, वो बेचारे लेटर ही लिख सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम माय फ्रेंड्स इन द डायस्पोरा टू डू मोर इन वाशिंगटन। वाशिंगटन कैसे अफेक्ट होगा एक लंबी कहानी है, बट देयर आर लेसन्स टू बी लर्न्ड फ्रॉम द डीप साउथ, देयर आर लेसन्स टू बी लर्न्ड फ्रॉम अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हियर। सो ये तो पाकिस्तान में चल रहा है। मीनवाइल आसिम मुनीर अपने दांत एज यूजुअल दिखा रहा है, चाहे वो
तख्त लाहौर में दिखाए या सिंध के डाकुओं के साथ दिखाए जो उसने नेशनल गेम्स अटेंड किए हैं। इंटरेस्टिंगली आसिम मुनीर का इस हफ्ते का सबसे बड़ा टूर जो है गुजरावाला में अपने होम ग्राउंड में रहा है, जिधर वो कोर कमांडर भी था। उधर उसने अजीब सी जाके बात की है कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों को फौज देखेगी। फौज का काम इंटरनल थ्रेट्स को नहीं देखना, स्पेशली सियासी बातें नहीं करना, मगर जैसे मैंने कल कहा था, अजीब सी बात है कि अब आसिम मुनीर जो बाकी सर्विसेज हैं उनको भी साथ सियासत में धकेलने लग गया है। आसिम मुनीर जब पहले खड़ा होता था पीछे पाक फौज का सिर्फ इंसिनिया होता था, अब एयरफोर्स और नेवी का भी होने लग गया है। एंड आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट दैट द एयरफोर्स एंड द नेवी आर आल्सो बीइंग ड्रैग्ड इनटू पॉलिटिक्स। एनीवेज, ये तो हफ्ते का मोटा मोटा जायजा है। आई बीन ऑन द रोड नाउ, हफ्ता हो गया मुझे न्यूयॉर्क छोड़े हुए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये पागल हरकत क्यों कर रहा हूँ, 4,500 मील न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। वेल, टुडे आई रिकैप मेरे जो पहले 4 दिन हैं न्यूयॉर्क से वर्जीनिया, वर्जीनिया से नॉर्थ कैरोलिना और नॉर्थ कैरोलिना से जॉर्जिया तक जो मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट किया है वो आपके सामने है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरा सफर चलता रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। जो सहाफत डिपेंड करती है सफर पे, सहाफत डिपेंड करती है एक्सपीरियंस पे। रास्ते में मुझे पुराने दोस्त भी मिले, नए दोस्त भी मिले। इन दोस्तों से आपका तारुफ करवाऊंगा, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत में कैसे इन्वॉल्व हैं, इवन दो वो पाकिस्तान से बहुत दूर हैं। ये सब और बहुत कुछ आज के महाज में। तो अब शुरू करते हैं। 7 दिन पहले जो मेरा सफर शुरू होता है न्यूयॉर्क सिटी से, मेरे बरो मैनहट्टन से, उधर से शुरू करते हैं और आपको डीप साउथ का पिछले जो मेरे 4-5 दिन गुजरे हैं उसका दौरा करवाते हैं। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ये कहानी जो है कभी शायद किसी और पाकिस्तानी सहाफ़ी ने ऐसे नहीं सुनाई होगी जैसे मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कनेक्शंस ड्रॉ कर रहा हूँ इतने बड़े मुल्क, इतनी बड़ी सुपर पावर के हमारे छोटे से मुल्क के साथ। एंजॉय करें, आज वीकेंड है, थोड़ा सा कभी बिग पिक्चर भी देखना चाहिए। हर चीज जो है वो सिर्फ न्यूज एंड एनालिसिस पे नहीं बेस्ड होनी चाहिए। कभी कभी जो लाइफ है उसको सफर से भी, सफर के लेंस से भी हमें देखना चाहिए। सो एंजॉय करें। अभी के लिए इतना ही। मैं अब इधर से आगे टेक्सास जा रहा हूँ। टेक्सास में मैं 2-4 दिन रहूंगा। टेक्सास बहुत बड़ी स्टेट है, सबसे बड़ी स्टेट है, लोन स्टार स्टेट है। टेक्सास में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मेरे दोस्त हैं, यार हैं, कॉलेज के, स्कूल के, उनसे भी मिलूंगा। तो अब मैं ह्यूस्टन, ऑस्टिन, डैलस की तरफ जा रहा हूँ। लंबा सफर है, विश मी लक। और उसके बाद फिर सहरा से होता हुआ एरिजोना, नेवाडा, ऑफ कोर्स न्यू मैक्सिको से इवेंचुअली कैलिफोर्निया जाऊंगा। मेरा सफर जारी है, महाज जारी है। होपफुली आपकी सपोर्ट भी जारी रहेगी। स्टे विद मी, द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आर वेरी एक्साइटिंग एंड आई होप you enjoy them. It's a little past 3:30 at Sunday afternoon, December 7th. I am about to embark on the longest journey of my life. I am embarking on what seems to be a 40-day journey. I'm heading to California. Currently, I'm in New York on the Upper West Side. I'm in a Mini, which is stacked up to the brim. I've got all sorts of fun stuff, starting from my trail mix, waters, gear, everything else. And I am on my way to California. The trip starts with Virginia. I go on to North Carolina. I go on to the deep south, and then I take it forward. I'm not sure what's going to happen in the next 20-30 days, but I think I'm ready. So here we go. Wish me luck. Okay, so it's day 2
and I've just had a quick dinner at Taco Bell in Ashland, Virginia. I am on my way to Richmond. It's the first snow I've seen in a while. This is funny because I'm actually heading south. So the weather's supposed to get warmer, not colder, but I guess it's going to get colder before it gets warmer. Day 2, around 400 miles done, roughly. And I'm okay. I'm okay as long as there's some stretch breaks, which I'm taking in the middle. I'm okay. I think I'm going to be fine. As long as there's Taco Bell, life's going to be just fine. Yeah, all of America looks the same at some point. Same Five Guys, same Hampton Inns, same T-Mobiles. It's the same, but it's not. That's the difference. Outside your apartment on Costa Nostra Ulisa in the mornings and evenings. Yeah, I'm here. Are you? Yeah, I'm Oh, here. no, no. There you go. All right, that's my home, I guess, for the next couple of days. Awesome. There he is. Hey, क्या? मुझे डीसी से मिला। क्या डीसी से मिला? मुझे अभी घंटा पहले मिला। हाँ? Yeah, it was okay. Oh man. Oh, unbelievable. Literally drove into a storm. So the new adventure phase begins. This is my buddy Tala. Say hi. And we just pulled up to his boat, and then now we're gonna go get some dinner and hopefully drive his damn Jeep. Okay, so we've been driving around for the last 10 minutes trying to find something to eat. We can't find anything to eat because of a storm. So I might end up eating Tala if he doesn't feed me. But yeah, this is the problem. This is the problem. This is what a storm can do to rural America. It's literally a ghost town. It's fantastic. I love it. Yeah, हंस रहा है. इसमें कोई हंसने की बात नहीं है. Holy shit! Total shutdown. No food. बस में सोएंगे रात. Oh my god! I thought whoa! Whoa! What fun! Oh, sliding, always fun. Got on tape. Easy boy. सिगरेट खुला है, दारू खुला है, खाना नहीं खुला. ये अमेरिका की असलियत है. There's a little massage parlor open. Open है. Massage parlor open है, खाना नहीं है. This place says it's open. Nope. ATM open. It says now open. Okay, so that was the weirdest place because they had like gambling machines, betting machines, but they didn't have coffee. So now I don't have coffee. Isn't that weird? I think that's weird. Like they had everything but coffee. Okay, so it's my first time at the Waffle House. This is awesome. My chicken sausage and cheesy scrambled eggs.
and country gravy and hash browns. You want grape, strawberry, or Who gets jelly? That's chicken melt, and this is awesome. You get the jelly. That's awesome. Of course, I get the jelly. What jelly do you want? This is my bed. This is my kitchen. This is the standing desk. This is my host. This is the view. Ooh. And then this is the bedroom quarters. And this is the view from the bedroom. And this is where I'm about to start my day from. Incredible. Incredible. Oh, I love it. I think I'm gonna get a boat. This is the other boat, in case this boat goes under. And of course, essential in every man's life, the grill. Fabulous. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और एक्चुअली आज जो खोले वो भी हमने ही खुद खोले। फिर से रीस्टार्ट। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए, बल्कि आज जो महाज मैंने खोला है वो मैंने अपने खिलाफ ही खोला है। नहीं, विल डू इट अगेन। स्टॉप। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। स्टॉप, लेट मी रिव्यू। Okay, so I'm at a gas station somewhere in Greensboro, North Carolina. This is the most south I've ever been. It's a very different kind of country already. You can see it's very different sort of like type of poverty that you see. It's also a very different type of racial mix that you see here. It's also a very different type of like place you see. Right behind me is this Biscuitville, as you can see. I don't know if you can see it, but I've never heard of a Biscuitville, but evidently it exists. Anyways, the gas station has the same stuff, but the gas is cheaper. I haven't really talked to anyone since I drove into NC, but this is the most south I've gotten up. Main thing I've noticed is the accents are a little different, obviously. But the people are nicer. Everybody smiles at each other, which is nice. Anyways, on to Charlotte. There's more to come. All right, get in the car. We done? Battle ready? Okay, so finally 4 दिन मुझे हो गए हैं on the road. न्यूयॉर्क से निकले हुए 4 दिन हो गए हैं मुझे. मैं अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहा हूँ. Going from literally one part of the continent to the other. And I'm trying to rig up systems. I'm not working with a cameraman. I'm working without a team, working alone. I'm thinking life might be interesting this way. Because बंदा जब अकेला सफ़र करता है, I think सबसे ज़्यादा उस वक्त सीखता है. तो सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ. मैं इस वक्त शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना से निकल रहा हूँ.
एंड मुझे अब अटलांटा जॉर्जिया जाना है. मैं टेक्निकली अमेरिका के डीप साउथ में अब जाने लग गया हूँ. डीप साउथ हमेशा मेरे लिए एक बहुत मिस्टीरियस किस्म का हदफ था, बिकॉज जो डीप साउथ है अमेरिका का, वो लोग कहते हैं कि अमेरिका का बलूचिस्तान है, अमेरिका का केपी है. लड़ाई झगड़ा, गुर्बत, ड्रग्स, वायलेंस, गन कल्चर, रिलीजियोसिटी, नस्ल परस्ती, रेसिज्म जिसे कहते हैं, जो भी अमेरिका के फॉल्ट्स जो हैं वो और फॉल्ट लाइंस जो हैं सियासी और सोशल, वो अमेरिका के डीप साउथ में पाई जाती हैं. अब अभी तक तो मुझे मज़ा आ रहा है. अभी तक तो मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, मगर जब मैं आ रहा था, मैंने दोस्तों को बताया, उन्होंने कहा था कि भाई जब डीप साउथ से गुजरो, जॉर्जिया, अलाबामा, लुइसियाना, मिसिसिपी, टेनेसी, तो जब डीप साउथ से जब गुजरो तो ज़रा खैर से गुजरो. और अगर तुम सफ़ेद फार्म नहीं हो, इफ़ यू नॉट वाइट, यू माइट गेट इनटू प्रॉब्लम्स. वेल, नो प्रॉब्लम सो फार. मैं जिन दोस्तों के पास इधर रहा अभी शार्लेट में, वो इधर 20-25 साल से रह रहे हैं. they're fine, I think. They don't have anything to complain, but they're very rich. जो लोग अमीर हैं अमेरिका में, मेरा ख्याल है वो कहीं भी सही हैं, मगर जो लोग अमीर नहीं हैं, हम जैसे जो मजदूर लोग हैं, वो कैसे रहते हैं, ये अब देखा जाएगा. 5 घंटे की मेरी ड्राइव है. अभी मैं शार्लेट के बड़े खूबसूरत सबर्ब्स से गुजर रहा हूँ. मैं कोशिश करता हूँ अपना दूसरा कैमरा भी ऑन करूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं जा कैसे रहा हूँ. मगर सर्दी शुक्र है कम हुई है. अभी भी है, अभी भी तकरीबन 10 डिग्रीज़ है, मगर 10 डिग्रीज़ न्यूयॉर्क में गर्मी होती है, तो मेरे लिए ये फिर भी अच्छा वेदर है. लेट्स सी व्हाट गोज़, बट फॉर नाउ फ्रॉम माय ट्रांस अमेरिकन एडवेंचर, फॉर नाउ this is it. Hello. Hello, Sam. How you doing? क्या हाल है? Good, I'm good. How WhatsApp? was the how? Should I do WhatsApp thing? Yeah, let's do a WhatsApp thing. How was the show today? What's the feedback? Very good show. This source calls are what make it. Honestly. Yeah. People are sharing it already. Yeah. What are they saying? There are also good views happening. I didn't get to chat with anyone or anything today. What's happening with the show? Okay. So there are few people who are like, it's quite interesting. Some people were saying कि ये सारी जो news है, ये आप जरा पहले हमें analysis दे दिया करें, इससे पहले कितनी बुरी चीजें हुई. That was funny. We have That's funny. almost 6K views. Okay. And within the first hour, which is great. And on top of that, there are some people who are saying that we want you to kind of weigh in on the Hamid Mir story that's come out also. That's interesting. What's the Hamid Mir story? And then I was just looking into that after I saw that comment. It just came out. And there are few questions, like the people are asking you like actual good questions, which is like, how did the general manage to land in Afghanistan, and questions like that are actually really good. Yeah, I really enjoyed today's show. The insight was really good. Okay, well, maybe one section we can develop after shows like this. One section that we can develop is Answering questions. Yeah, answering select questions. Just take screenshots, put them in the rundown, and I will literally show those. And just send the screenshots on WhatsApp. We show those and we say Falana, and then we follow up. It's extra content. It's good content. We can do it towards the end. Yeah, it's good content. It's good content. Nobody does it. We should do it because we are tech savvy enough to read it, absorb what's a good question versus what's a silly question, and say, you know what, that is a good question. We'll take a minute or two to answer that today. So, and that'll really encourage people to write more. And writing more means more engagement, and more engagement is just generally good for everyone. Let's start that. Why don't you take some screenshots today and plug it in?
Okay, so I've been driving now for a couple of hours. It was supposed to be around a 4.5 hour trip, but I did take a couple of detours. I got some gas and I stopped by for lunch. Chick-fil-A, जो साउथ का McDonald's है, great chicken burgers. तो वो उसके लिए ब्रेक ली. I'm in South Carolina somewhere. जॉर्जिया अभी तक शुरू नहीं हुआ. जॉर्जिया को पीच स्टेट कहते हैं, आड़ू की रियासत. I'm not sure why, but it's a completely different landscape. I hope my other camera catches this. अगर एक तो weather improve हो गया, 0 डिग्री से मैं निकल आया हूँ. इस वक्त बाहर तकरीबन 8-9 डिग्रीज है सेल्सियस. दरख्त जो हैं वो फिर से हरे हो गए हैं. The trees are green again क्योंकि weather change हो रही है. Landscape definitely change हो रहा है, but साथ साथ as I just noticed in the restaurant, ज़ुबान भी change हो रही है. लोगों का रवैया चेंज हो रहा है. साउथ की हॉस्पिटैलिटी बड़ी मशहूर है. कहते हैं कि साउथ की जो मेहमान नवाजी है, इसलिए वही कहते हैं ना कि ये साउथ जो है केपी बलोचिस्तान है अमेरिका का, क्योंकि इधर की मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है. पीपल आर रियली नाइस. लहजा चेंज हो रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ y'all, देयर इज अ लॉट ऑफ bless your heart. उस किस्म की. इधर जब आपको कोई गाली भी दे तो bless your heart करके देता है. तो it's interesting, but I am not really surprised because मैं मिड वेस्ट में बड़ा हुआ हूँ. मिशिगन में मैंने कॉलेज किया था. मिड वेस्ट की भी सिमिलर वैल्यूज़ हैं जो अमेरिका की साउथ की हैं. जो मेहमान नवाजी है, हार्ड वर्किंग एथिक है, वो मिडवेस्ट का अलग है. बट लॉट्स ऑफ इट्स गॉड फेयरिंग कंट्री. बहुत सारी चर्चेज नज़र आती हैं मुझे. हाईवे से बहुत सारे एग्जिट्स जो सिर्फ चर्चेज के लिए हैं. तो आप अगर केपी बलोचिस्तान भी जाएं, उधर की जो रिलीजियोसिटी है, उधर की जो मेहमान नवाजी और इधर की, वो मुझे दोनों जो हैं सिमिलर लगती हैं. Anyways, I have another 2 hours and 43 minutes to go. Straight shot है. अटलांटा इसलिए मशहूर है क्योंकि अटलांटा एक तो आप कह सकते हैं साउथ का कैपिटल है. अमेरिका की जो साउथ है उसका सबसे बड़ा शहर है. और फिर कोका कोला का शहर है. कोका कोला उधर से शुरू हुई. कोका कोला के आज भी हेडक्वार्टर्स, फैक्ट्रियाँ वगैरह उधर ही हैं. और कोका कोला का जो सीक्रेट फार्मूला है, जो वो बड़ा छुपा के रखते हैं, वो भी अटलांटा में छुपा हुआ है, पड़ा हुआ है. अब मुझे कोका कोला का फार्मूला तो नहीं मिलेगा, but I'm heading into the Coca-Cola city. So let's see what happens. But it's really interesting being alone this long, this far. There's something awesome about it. I love it. Now, anyways, back to Beyonce.